Very good evening to one and all. I hope all are fine in this COVID-19 outbreak. So, till now you got an idea. I am going to take your physics part. So, let's start with the numerical problems that that previously they are. Today we are going to deal with numericals, and those numericals are from your previous papers, and some are new to you also. For example, your JEE mains, your NIT. So today I am going to take only numerical so that you get the feel of the topic. We have done with the numericals, we have done with the exercise of chapter number 2, that is units and measurement, but today's lecture is for extra numericals, and I am going to give you an assignment also after this video. So let's start with the numericals on error analysis. We have finished with the topic dimension analysis, even we have done the assignment part also. Now error analysis, you know the topic, you know the idea of the error analysis, you know the end results. I am assuming this because we have done this. So let's start with the numerical portion. Now let me read question number 1. Yes, very easy. Question number 1 is, we will start with the easy one and go to the difficult levels. Very easy. Rectangular field having, question is rectangular field having length 4 plus minus 0.4 meter, breadth 2 plus minus 0.2 meter. Find out area with proper error limits. Find out area with proper error limits. This is your question. Very easy. We have done some numericals like this before. So let's start. We know that area is equal to length into breadth. Then what is going to be area? Length is 4 and breadth is 2. These are the errors. Right now I am asking only for area. 4 into 2, that is 8 meter square. So now question is, you have to find out error. So area is length into breadth. So multiplication is going on. So what will be the formula for multiplication? Yes, delta A divided by A, delta L divided by L plus delta B divided by B. So we have A, we have delta L, we have L, we have delta B, we have B. So from this we can find out the error in area. We can find out delta A. So delta L divided by L plus delta B divided by B A. So delta L is 0.4 divided by 4 plus 0.2 divided by 2. Area कितना आया? You can see 8. So 0.1, again 0.1. So 0.2 add करके into 8, 1.6 meter square. So this is delta A. So what is asked? You have to find out error with proper error limits. So A plus minus delta A is equal to, A is 8 plus minus 1.6 meter square.
Very easy. Now question number 2 is, suppose you are given with a cube. Sorry. This is the cube. Mass of this cube is 6 plus minus 0.3 kg and volume is 2 plus minus 0.2 meter cube. So find density, that is, density is rho, with proper limits. I want you to solve this numerical with proper error limits. When you will going to watch this video, I want you to pause the video and try this numerical yourself. So this is multiplication. Let me solve for division. Sorry. We know that density is mass divided by volume. So first of all, we are going to find out 6 by 2. Very simple, 3 kg per meter cube. So you have to find out error in density also. So delta rho divided by rho is delta m divided by m plus delta v divided by v. So you have each and everything. Again you have to find out rho. So delta m by m plus delta v by v rho. Now you can put the value. Delta m is 0.3, mass is 6, delta v is 0.2, volume is 2 and rho is 3. No, when you are going to solve this, I am writing it directly. You will get, you can put 10 here, so you will get 1 by 20, 0.1. So it will be 1 by 20 plus 0.1 into 3. 1 by 20 comes out to be 0.05 plus 0.1, 3. 0.45 kg per meter cube. So this is delta rho. So what will be the representation with proper limits? Rho plus minus delta rho is equal to 3 plus minus 0.45 kg per meter cube. So these are the easy ones. Now let's do some more numericals. Let's do this is in NEET 2019. Yes, NEET 2019. This question is there. NEET 2019. Question is, in an experiment, you can find out it in net also, or even you can find the percentage error. Now this is the question. In an experiment, the percentage error occurred in the measurement of physical quantities A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then find out the percentage error in the measurement, that is X is given as this. So here you will use the concept of last part where physical quantities are raised with some power. So this is the X, very simple.
एक्सिस ए वी हैव डिस्कस्ड इट इन वर्चुअल क्लास में, हमने डिस्कस किया था जो हमने गूगल मीट पे ली थी, C1/3 d³ सो जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा x इंटू 100। वैसे तो इसमें ये है, लेकिन relative error और fractional error को if you want to write it in percentage form then you have to multiply it by 100. Then n is 2 power पहले delta a by a plus into 100, again I am writing, sorry, plus 1/2 delta b by b into 100. Now I told you yesterday or where we have discussed this topic, powers are always added, sorry powers not, errors are always added. So भले ही ये denominator में है, still you will write 1/3 into delta c by c into 100 plus 3 into delta d by d into 100. So answer will be, what is percentage error in A? 1, percentage error in B 2, C में 3, D में 4, यानी कि 1% प्लस 1/2 इंटू 2% प्लस 1/3 इंटू 3% प्लस 1 प्लस 3 इंटू 4%. सो कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 12, 13 14 15 16. तो सी ऑप्शन था आई थिंक 16%. सो आंसर विल बी 1600. अगर ये क्वेश्चन आया होगा देन इट विल बी वेरी इजी. जब आया होगा जिसने 2019, मतलब ये नंबर तो पक्के. अब ठीक है, लेट्स. So this is a question that is written here. So same question like we have done for division, but here you have to find out density again, but here volume is not given, length is given for cube. So this is the percentage error in mass, this is the percentage error in length. So for cube, you know the formula for cube, cube is, for volume is length cube. So density is mass divided by volume, m divided by L cube. So this will be this only. So if I want to find out delta rho by rho, that comes out to be delta m plus delta L सिंपल. अब यहाँ पे परसेंटेज एरर बोला है तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 100%, और यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 100%, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 इंटू 100%. सो आई एम गोइंग टू सॉल्व इट हेयर ओनली. सो delta m, this is 1.5% plus, now delta L by L is 1% only, so 3 into 1%. So 1.5 plus 3, that comes out to be 4.5%. So find out the maximum error in density. So what is the maximum possibility of error is, that will be 4.5%. I hope it is clear to you. Now let's do one more question. The error in the measurement of radius of a sphere. Radius, the error, so the error in the measurement
I am not going to do. I am just going to write a question for you, and you will going to do it yourself. Measurement of radius of sphere is 1%. Find the error in the measurement of volume. Measurement of volume. एक चीज़ मैं यहाँ पे फिर भी बताना चाहूँगी. Now what is percentage error in rate? मैं लिख लेती हूँ what is given. Percentage error in R is 1%. इसका मतलब है delta R by R into 100% is 1. And you have to find out the delta V by V, percentage error in volume. अब ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम फॉर अ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहाँ पे मैं एक बड़ी बात बताने जा रही हूँ. आई एम गोइंग टू गिव यू वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. दीज टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स. सो when I am going to find out the percentage error in this formula, then constant terms will not give me any important data, so I am not bothered about these terms. So what I am going to do, pi is constant, 4/3 is a number, so constant. So I am not going to apply formula on these numbers. I am straight away going to apply formula on r cube. So 3 delta r by r into 100. So I hope you will do it yourself now. Only 3% it will come. Answer will be 3% only. Now very very important question, and even it is in your NCERT. If you have been to text, question is R1 is 5 plus minus 0.2 ohm and R2 is, और इस तरह का क्वेश्चन कई बार जेई मेंस में निट में आ जाता है, 10.0 plus minus 0.1 ohm. So for resistance we have done, that is a simple addition and subtraction. So you have to find out error in parallel with possible value. Find out total error in parallel with possible percentage error. ठीक है? This is the question. Now let's start. So you know class 10th Ohm's law, electricity, I think chapter, we have done the relations for series and parallel combination. You know क्या होता है parallel combination? ये like this only. This is R1, this is R2. So result is RP बोल देती हूँ मैं, parallel 1/R1 plus 1/R2. Done? Done? Now when I am going to take LCM R1 R2, so it comes out to be R2 plus R1. So clear? And RP will be R1 R2 R1 plus R2. So now अब आपको बोला परसेंटेज एरर निकालना है, तो यू मस्ट हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ध्यान से देखेंगे अब, डेल्टा आर पी. कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे ये बता दो, कैसे निकालेंगे बताओ. और वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, यहाँ पे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, दिस इज एक्स, दिस इज ए प्लस बी.
उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों टर्म्स प्लस हो रही है. देन स्ट्रेट अवे इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द एरर यू कैन डू 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3. नो, इट्स रॉन्ग. ये a प्लस बी है, ये 1/a प्लस 1/b है. सो प्लीज मेक इट श्योर you will not apply the formula for addition and subtraction. So how you are going to find out delta RP? This is, ध्यान से देखना, ट्रिक बता रही हूँ मैं इसके लिए. वैसे तो डेरिवेटिव लेके करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, u बाई वी की फॉर्म में आता है, ठीक है. लेकिन मैं स्ट्रेट अवे जो मैं बताने जा रही हूँ वो देख लेंगे ध्यान से. दिस इज एक वेरिएबल है, ये दूसरा वेरिएबल है, ये दो ऐड हो रहा है तो ये तीसरा वेरिएबल है, ठीक है. तो मैं R1 आपके पास है, R2 आपके पास है. R1 प्लस R2 मैं निकाल देती हूँ. R1 प्लस R2 क्या आएगा? दैट इज 5 प्लस 10 दैट इज 15. क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, R1 प्लस R2 इज 15. अब ध्यान से देखेंगे, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है और ये तीसरा वेरिएबल. तो अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे, दिस इज बेसिकली नथिंग ए बी अपॉन सी. तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी कि डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाय सी इंटू 100. याद रखना इस चीज़ को. सो जब मैंने यहाँ पे लगाया डेल्टा आर पी अपॉन आर पी, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा R1, परसेंटेज एरर निकालने को बोला तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी लगा दो भाई. डेल्टा R1 बाय R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100. अब ध्यान से देखेंगे, डेल्टा R1 कितना है? 0.2 और R1 कितना है? 5 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 बाय R2, डेल्टा R2 कितना है? 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 प्लस R1 प्लस R2 कितना निकाला आपने? 15. नो, दिस इज इन डिनोमिनेटर. तो एरर क्या है इसमें? एरर क्या होगा? 0.2 प्लस 0.1, इट विल बी 0.3 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100. बात समझ आई? बात समझ आई? तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट को हटा के 10 लगाया, 0 0 कट गया, 5 4 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 10 लगाया 1, ठीक है, और ये आया 2, 4 5 6 7, ठीक है. ये आया डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इंटू 100% इज 7%, ठीक है. अब आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट एरर इन पैरेलल विथ पॉसिबल, यानी कि आपको पूरा निकालना है, ठीक है. ये तो था डेल्टा आर पी अपॉन आर पी इंटू 100. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर पी? ठीक है, तो आपके पास आर पी कितना आया? अब आर पी कितना आया? यू कैन लेट मी डू. आर पी का फॉर्मूला क्या था? आर पी का फॉर्मूला क्या था? आर पी का फॉर्मूला था R1 R2 R1 प्लस R2. आर पी का फॉर्मूला था R1 R2 R1 प्लस R2.
R1 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10/15, तो 5 3 ज़ा 15, 10/3 जो आएगा आपके पास 3 से 3 3 ज़ा 9, यस 3.33 ओम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ RP। बात समझ आई? बात समझ आई तो RP भी निकाल दिया आपने, डेल्टा RP बाय RP की वैल्यू भी निकाल दी है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क के लिए अगर क्वेश्चन दे दूं, चलो पहले इतना करके देखेंगे, फिर हम और डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर होमवर्क क्वेश्चंस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।